आपका आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके चैनल पर। डॉक्टर जे.के. तिवारी हियर वंस अगेन on your favorite platform, the new lyceum for English literature. We are meeting after a long gap, right? At least 7 days gap. Start करते हैं आज की क्लास। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, लोगों को बुला लीजिए, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए, सबके साथ चैनल साझा कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने डाउट्स पूछ लीजिए, अपने क्वेरीज पूछ लीजिए, सारे मामले रिजॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास। हाँ, एक बार ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी जरूर कंफर्म कर दीजिए। एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपरली? आवाज आ रही है हमारी प्रॉपर आप तक कि नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म करिएगा ऑडिबिलिटी। शुरू करते हैं आज के फिर क्वेश्चन आंसर सेशन को। राइट, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम है, सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है, सभी को नमस्ते है जी। फटाफट बताइए ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी कंफर्म हो रही है कि नहीं? कंफर्म्ड है तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। बड़े बड़े मैसेजेस आने लगे हैं। सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम है, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम है। शुरू करते हैं आज के आपकी क्लास को। ठीक है, चलो शेयर कर लिया, चैनल साझा कर लिया है, शुरू करिए। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर जी। श्रीपति सिंह, अजय मिश्रा, रंजना मौर्य, फरीन खान, रंजनी साहू, बिंदु यादव, सभी को गुड इवनिंग, सभी को शाम वाली गुड इवनिंग, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत है जी। राधे राधे पूजा। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वाज बेस्ड ऑन द ancient physiological theory of 4 humors, right? Ancient physiological theory of 4 humors which were, वो 4 humors कौन कौन से हैं? This is the first question of today's class. First point, the comedy of humors was based on the ancient physiological theory of the 4 humors. 4 humors were there and the comedy of humors was based on those humors only, and they were the liquid parts of your body and they decided the human temperament, right? And excess of any humor creates comedy. That comedy is called comedy of humors, and the best example of comedy of humors was written by Ben Jonson, Every Man in His Humor. And then he wrote Every Man Out of His Humor, Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor. And which were those 4 humors? Those 4 humors were blood, phlegm, color and melancholy, right? These were the 4 humors of ancient physiology, and from ancient physiology, from the medical science, they were brought to literature by Ben Jonson, right? By Ben Jonson they were brought to literature, they were brought to comedy, and comedy was created with the abundance of any of these humors, right? Any of these humors का abundance जो है वो comedy जो create करता है उसे comedy of humors कहते हैं। And later these comedy of humors developed another form of comedy during the restoration period, and they are called comedy of manners. And do you know that there are many similarities between comedy of humors and comedy of manners? For example, comedy of humors and comedy of manners both were basically city comedies. Basically city comedies, they were comedies, they were city comedies. City comedies are plays, are comedies that are basically based on, जो किस पर based होते हैं? Basically based on a particular, right, city, and that city might be
London or Paris. Alright. Then next question. Who among the following is not a poet? Who among the following is not a poet? Poet कौन नहीं है इसमें से ये आपको बताना है. Thomas Hardy, Charles Lamb, Charles Dickens, D.H. Lawrence. Who is not a poet? Thomas Hardy belonged to which period? Thomas Hardy belonged to the Victorian period, though he is not a true Victorian. Charles Lamb belonged to the Romantic period. Charles Dickens belonged to the Victorian period, and D.H. Lawrence belonged to modern period. And who is not a poet? Ajay Mishra says that answer is C. Neha Singh का answer A है. रजनी साहू का C है. फिरोज खान का C है. श्रुतिका का C है. श्रीपति का आंसर B है. जूली गौतम का आंसर C है. Right? Everyone is right? And if everyone is right, Pratibha says C. सपना गंगवार डिकिंस. रीता राज का आंसर है B. Right? B means चार्ल्स लैम्ब. Right? भाई साहब ये जो भी आप कर रहे हो वो सब सफिशिएंट है, कुछ भी कम नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान ना होइए. क्वेश्चन के आंसर करिए. रमेश जी गुड इवनिंग. राइट. थॉमस हार्डी was a poet. Neha Singh is confused between Thomas Hardy and Charles Dickens. Thomas Hardy was a great poet, and do you know, once he stopped writing novels in 1895, his last written novel was The Jude the Obscure. He started writing poems and he got published several collection of poems. One of the most famous is Wessex poems, for example. Charles Lamb is basically known as Prince among essayists. Charles Lamb is basically known as Prince among essayists. Prince among essayists is Charles Lamb. But before he became an essayist, Charles Lamb was a poet. And along with Samuel Taylor Coleridge's poetry, he got published several poems. And one of the most famous poems is Farewell to Tobacco. Charles Dickens was purely a novelist. He was purely a novelist, though he wrote some short stories as well, but he never practiced poetry. And D.H. Lawrence was a 20th century novelist, short story writer and poet as well, and his most famous poem is Snake. Right, so the right answer to the question is which one? The right answer is here Charles Dickens, C. Alright, Hardy was the poet, Lamb was the poet, Lawrence was the poet, but Charles Dickens was not a poet, he was a novelist. Alright, then कोई confusion हो तो बताइए. Any confusion, any problem? Yes Rita, absolutely. जी छोटी कश्यप, good evening. Fine, कोई confusion तो नहीं ना? पक्का? Let's proceed to the third question. All right. According to Plato, what is the moral purpose of art? According to Plato, what is the moral purpose of art? To connect human being with a higher ideal,
to entertain those who enjoy it, to criticize society through satire, to bring to light social operations. All of the above answers are correct. Which one is the correct answer? According to Plato, what is the moral purpose of art? And you know that Mr. Plato was an idealist. He was a moralist. And what should be the moral purpose of art? And on the ground of morality, he had perhaps banned literature from his utopia, from his republic. Which one is the correct answer? Read all the options before you reply. Ajay Mishra, Shrutika Bhagmare, Julie Gautam. Where are others? Please keep on replying. Ji Divyanshi, good evening. Keep on replying. Your answer is very precious. All of you have to answer. सबको आंसर करना होता है और सब लोग आंसर करते रहिए, फटाफट आंसर करते रहिए और चैनल शेयर कर दीजिए एक बार अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत दिन बाद क्लास हो रही है, सो दे मस्ट नॉट बी नोइंग, राइट. शाबाश शारिका, प्रतिभा, शशि, नेहा, रीता, शाबाश, हुजा, स्वाति, दिव्यांशी, वेरी नाइस, well done. And according to Plato, the moral purpose of art is to connect human beings with higher ideal, right? To connect human being with higher ideal. This was the objective of moral. This was the moral purpose of art. So right answer is A. Right, Shrutika? Right answer is A. To connect human beings with higher ideal. To connect human beings with higher ideal. This is the moral purpose of art, and those who are obsessed with all of the above, they are incorrect here. Right? Do not click on such answers directly without giving proper thought. Right? The moral purpose of art is not to criticize society through satire. Is it? The moral purpose of art is not to criticize society. And if this statement is incorrect, it means E is incorrect. The moral purpose of art is not to entertain those who enjoy it, but the moral purpose of art is to inculcate moral values, is to inculcate higher values among people. राइट, ह्यूमन बींग्स को कनेक्ट करना है हायर आइडियल से. दिस इज द मोरल पर्पस ऑफ आर्ट. राइट, ये आर्ट का मोरल पर्पस होता है. ऑलराइट, सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3 इज ए. देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना. मोरल पर्पस ऑफ आर्ट अगर आपने पहले से भी नहीं पढ़ा है, यू कैन टिक द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शंस. Options, read the options very carefully, very thoroughly before you click the right answer. All right, next question. Question number 4. Which of the following literary theorists is most closely associated with the concept that became known as liberal humanism? There are few theorists are given: Aristotle, Victor Shklovsky, Clint Brooks, Stanley Fish. And the question is, who is associated with liberal humanism? Liberal humanism से associated कौन है? लिबरल ह्यूमनिज्म से एसोसिएटेड कौन है? फर्स्ट इज ह्यूमनिज्म. एंड लिबरल इज द एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमनिज्म. यू हैव टू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, यू हैव टू बिलीव इन ह्यूमंस, दैट इज ह्यूमैनिटी. राइट, दैट इज ह्यूमैनिटी. एंड हु इज एसोसिएटेड विद liberal humanism? Humanism means when you analyze a text on the basis of humanity, right? Humanities, that is humanism.
But here Victor Sklodowsky, he belonged to which criticism? Russian formalism. You must have watched the video. Russian formalism. Clint Brooks is associated with new criticism. Clint Brooks is associated with new criticism, and Aristotle is associated with liberal humanism. Aristotle is associated with liberal humanism. Aristotle is the right answer here, and Stanley Fish is associated with whom? This is the question for you. You have to search कि Stanley Fish किससे associated है, Stanley Fish किससे associated है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है. आप ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आफ्टर द क्लास आंसर डालिएगा कि Stanley Fish is associated with which aspect of literary theory. 3 का मैंने आपको बता दिया. Aristotle is associated with liberal humanism. Victor Sklodowsky is associated with Russian formalism. Clint Brooks is associated with new criticism. Right? And you have to search the answer. Stanley Fish was associated with. किससे associated है? जी रिंकी, good evening. Clear? Next question. What is humanism? What is humanism? An idea traditionally associated with the Renaissance, a humanity-centered view of the universe, a school of theory devoted to the revival of classical, ancient Greek and Roman literature. All of the above answers are correct. What is humanism? बताइए आंसर. What is humanism? फटाफट please. An idea traditionally associated with Renaissance. Option A, a humanity-centered view of the universe. Option C, a school of theory devoted to the revival of classical, ancient and Latin literature. And all of the above answers are correct. Which option is correct here? What was the Renaissance? What was Renaissance? What is the meaning of Renaissance? Renaissance means reawakening. Renaissance means reawakening. Renaissance means rebirth. Renaissance means revival. Right? Revival of what? Revival of what? Rebirth of what? What was reawakened during the Renaissance? What was reawakened? Who was sleeping? Sleeping कोई था ना, तब तो reawakening होता है. Who was sleeping? What was sleeping? What was in the state of slumber? In the state of slumber क्या था? In the state of slumber was humanity. Right? In the state of slumber was art. Right? In the state of slumber was literature. And all these things were revived. All these things were revived during the Renaissance. And Renaissance means reawakening of art, reawakening, revival of literature, revival of Greek and classical literature. And humanism means human is in the center of the universe. Hamlet says, what a piece of work is man. Right? That is humanism. Right? Humanism is a belief that was prevalent during the Renaissance. Humanism means revival of classical literature. Classical literature means
Greek literature as well as Latin literature. Greek art, classical art were revived during the Renaissance, and it was a humanity-centered view of the universe. And here right answer to the question is D. All the three options are 100% correct. All the three options are 100% correct. Right answer to the question is humanism is an idea traditionally associated with Renaissance. Humanism is a humanity-centered view of the universe. Humanism was a school of theory devoted to the revival of classical, ancient and Roman literature. Hence is the answer all of the above. Alright, कोई कंफ्यूजन हो तो शेयर करिए, कुछ कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो शेयर करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Anybody having any doubt, anybody having any query, anybody having any question, please do share first and then I will proceed. कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा. Should I proceed? ओनली EMRS करवा दीजिए प्लीज सर. उसमें जो राइटिंग वगैरह आती है उससे रिलेटेड वगैरह क्या होता है आशु भाई. और ओनली EMRS का मतलब क्या है? मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं and that English literature is for all examinations, and this is not exclusively, this is exclusively for literature, and these questions will help you clear all the examinations. You have just to show your faith, you have to show your belief in me and in these questions, right? I am not exaggerating, but these questions will definitely appear in your examination, right? No, not at all if you are not preparing for KBS. All right, start करें, प्रोसीड करें. और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके EMRS के नहीं है. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. In Dryden's essay of dramatic poesy, there are four interlocutors representing four different ideologies. All right, which of them expresses Dryden's own views? Lycidas, Eugenides, Neander or Christ? Right, an essay on dramatic poesy was written by John Dryden, and because of this essay only Dr. Samuel Johnson called him father of English criticism. Father of English criticism कहा जाता है. And there are in fact four interlocutors in the essay, and four interlocutors represent four different types of drama, right? One is representing classical drama, one represents French drama, one represents European drama, and one represents modern drama. Right, so who is here? Right, who is here? Who represents the views of Dryden? All right. कितने दिन बचे हैं एग्जाम के आशु भाई? And I hope this is your first class with me. Right, you have joined the class for the first time. Dryden's views कौन रिप्रेजेंट करता है? Dryden's views were represented by Neander. Neander means new man, and Neander supports modern drama, right? He supports modern drama, and modern drama is far better than French classical or Latin drama, right? So right answer here is C. Next question. The playwright Volsenka is from. ये देखिए, ये आपके EMRS का क्वेश्चन आ गया है.
राइट, ये EMRS का क्वेश्चन आ गया है। द प्लेराइट Soyinka is from Nigeria, Kenya, Egypt or the Sudan? Soyinka was awarded the Nobel Prize in Literature in 1986. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1986. Which country he belongs to? Nigeria, Kenya, Egypt or the Sudan? Right, he belongs to which country? He was awarded the 1986 Nobel Prize in Literature. Nobel Prize in Literature of 1986 was given to Soyinka, and he is a Nigerian. He belonged to the country Nigeria. नाइजीरिया से वो रिलेटेड है, नाइजीरिया से वो बिलोंग करते हैं, एंड एवरीबडी हैज गिवन राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following figures is considered to be the father of the linguistic theory known as structuralism? Father of modern linguist किसे कहते हैं? वाह, thank you so much. Which of the following figures is considered to be the father of linguistic theory known as structuralism? If you have watched my video on structuralism, तो आपका आंसर सही होगा. या आप सिर्फ इतना जानते हैं who is known as father of modern linguistics, तो आप इसका आंसर जानते हैं, and he is none other than Ferdinand de Saussure. राइट जी, नीतिका, सुबोध, हुडा, फिरोज, रीता, प्रियंका, लेट्स डिस्कस, जूली, स्वाति, एम्बाडिगो. right answer is Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure was a French linguist. फ्रेंच के थे? नहीं, he was a Swiss linguist. He was a Swiss linguist and he wrote a book, right? And for that book he is called the father of modern linguist, and he propagated the theory of structuralism. He propagated the theory of langue and parole, and he propagated the theory of diachronic and synchronic study. Right? इन सब के लिए जाने जाते हैं Ferdinand de Saussure, and he is known for structuralism. So right answer here is B. All right. Next question for UPPGT, for EMRS, for NET, for NVS, सबके लिए क्वेश्चन है ये. Which of the following texts is the best example of the argument that a work's meaning does not come entirely from the imagination of the author? अच्छा, एमए के एग्जाम में आया था, दिमाग खराब हो गया तो मेरा. ऐसा नहीं कहो यार. Which of the following texts is the best example of the argument that a work's meaning does not come entirely from the imagination of the author? Right?
Ramesh Yadav, Feroz, Sarika, Ajay. Let's discuss. Roland Barthes' Death of the Author, Jacques Derrida's Of Grammatology, Jacques Lacan's The Mirror Stage, or T.S. Eliot's Tradition and the Individual Talent. See Pratibha Upadhyay, Julie Gautam, Rita Raj. Shabash, come on. Though you are not too many, but you are not less. Sufficient है आप आंसर करने भर के. बताइए फटाफट बताइए. स्वाति चौधरी, very good. Ashu, wow, great. Right, the essay Tradition and Individual Talent was written by T.S. Eliot. And T.S. Eliot says that poetry is not the turning loose of emotion but an escape from emotion. And here T.S. Eliot says that a poet is made up of several poets. कई पोएट से वो मिलकर के बना होता है. यद्यप रोland बार्थ्स भी यही बात करते हैं कि जो टेक्स्ट होता है ना, ये टिश्यू होता है. किसका टिश्यू होता है? मेनी टेक्स्ट का. राइट, मेनी टेक्स्ट का टिश्यू होता है. बट ये टी.एस. एलियट का स्टेटमेंट था कि मीनिंग doesn't lie in the imagination of the poet, imagination of the author, but he had a tradition behind him. And what is the meaning of the tradition? Meaning of the tradition means there are many poets behind him, and the tradition and his individual talent, दो चीजें जब मिलती हैं तो वो पोएट्री बनती है. और इसलिए राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए. It is T.S. Eliot's tradition and individual talent that says that meaning does not come entirely from the imagination of the author, but meaning lies in tradition. Tradition and individual talent work together to arrive to the meaning. Right? Meaning तक पहुंचने के लिए दोनों काम करते हैं, तब पोएट्री लिखी जाती है. राइट आंसर इज ए. और इतना तो सोचिए यार कि मैंने कहा था कि ये यूपीपीजीटी का भी क्वेश्चन है, और यूपीपीजीटी के सिलेबस में ना तो लाकान है, ना तो बार्थीज है, और ना तो डेरिडा है. टी.एस. एलियट ही है. तो तुक्का भी लगाइए ना, तो हिसाब से लगाइए. जी मंजूर अहमद ब्रैकेट में जेआरएफ, गुड इवनिंग ब्रैकेट में जेआरएफ को भी. ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज राइट, टी.एस. एलियट्स ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल talent. Next question, question number 10. To what idea does the ancient Greek term aporia refer in the terms of deconstruction theory? Right, I had uploaded a video on deconstruction theory the day before yesterday, if I remember. Though I was not present there, that was an audio lecture. Audio, I myself was not there, but apart from me, pen, PPT, my voice, everything was there. And I hope if you are preparing for a serious examination, for TET exam, for NET examination, for assistant professor examination, for SET examination, then you must have watched that video. Here the question is from literary terms. Here is the word aporia, and aporia is the Greek term, right? And what is the meaning of the term aporia? This is the question, right? What is the meaning? The ability of a text to contain truth, the undecidability and essentially unstable nature of a text, the idea that a text has a specific meaning that be understood through a process of deconstruction, and Jacques Derrida's style of writing. What is aporia? Only two answers have come so far. One is by Sarika and second one is by Rita, and this shows that you have not watched the video properly. Now the third answer is from Julie. Aporia is a Greek term, and literally aporia means deadlock. Aporia means deadlock. What is the meaning of the term deadlock? Right? What is the meaning of the term deadlock? Derrida says
दैट मीनिंग कहां से आती है. देन ही टॉक्स अबाउट अ टर्म दैट इज डिफरेंस. Difference, and difference is made up of two words, difference and difference. एक ये डिफरेंस होता है और एक ये डिफरेंस होता है. डिफरेंस मीन्स जो डिफरेंट हो, ये वाला डिफरेंस है. एंड ये डिफरेंस क्या है? दिस डिफरेंस इज पोस्टपोनमेंट. पोस्टपोन करना, चीजों को टालते रहना. और अगर मीनिंग डिफरेंस में लाई करती है, दिस इज अ पेन बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉपी, दिस इज अ कॉपी बिकॉज दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज द बुक बिकॉज दिस इज नॉट अ टेबल. तो डिफरेंस तो चलता रहेगा ना. मीनिंग क्या करेगी? मीनिंग विल कीप ऑन डिफरिंग. मीनिंग डिफर करती रहेगी, मीनिंग पोस्टपोन होती रहेगी. तो हम मीनिंग पर पहुंचेंगे कब? डेरिडा सेज नेवर. हम कभी भी मीनिंग पर नहीं पहुंच सकते. मीनिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड. कभी भी मीनिंग डिसाइड नहीं हो सकती. एंड दिस सिचुएशन व्हेन द मीनिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड इज नोन एज डेडलॉक. दिस इज नोन एज इम्पास. Right? And this is the undecidability and essentially unstable nature of a text. This is the meaning of the term aporia. Right? This is the meaning of the term aporia. टालते रहिए, कभी पहुंचेंगे नहीं. Impasse, deadlock, there is no ending of difference. Right? Keep on making on difference. Difference create करते रहिए और मीनिंग क्या करेगी? वो डिफर होती जाएगी, वो पोस्टपोन होती जाएगी. ये पूरा डिकंस्ट्रक्शन है. सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बी, द अनडिसाइडेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ द मीनिंग. मीनिंग कैन नॉट बी फिक्स्ड, मीनिंग कैन नॉट बी डिसाइफर्ड, मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड. और अगर आप मीनिंग अंडरस्टूड करते भी हो तो मीनिंग इज बेस्ड ऑन difference. This is called post structuralism. This is called deconstruction. All right, समझ आया कि नहीं? ये बताइएगा. क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं? अपोरिया, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, फोनोसेंट्रिज्म, लोगोसेंट्रिज्म, पैल्गोसेंट्रिज्म, मैंने सारे वर्ड्स को क्लियर किया है उस वीडियो में. और देखिए कहीं ऐसा ना हो कि पीजीटी की तैयारी करते करते आप जेआरएफ हो जाए, है ना. ऐसा भी हो सकता है कि आप हमारे साथ रहते रहते पीजीटी की तैयारी करते करते जेआरएफ भी बन सकते हैं. इसलिए लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारिए. और इसीलिए शुरू में कहा था कि फॉर्म भर दीजिएगा, नेट का, जेआरएफ का फॉर्म भर दीजिए. डेफिनेटली यू कैन गेट थ्रू, यू हैव द पोटेंशियल टू गेट थ्रू. जरूर आप एग्जाम निकाल सकते हैं. हाँ, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं. जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ना हो जाए उसके पहले आप नेट निकाल लीजिए, उसके पहले आप जेआरएफ हो जाइए. फिर आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको सफलता दिला करके जाएगा. सफल होने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस आपको कुछ भी दिला सकता है. दुनिया की कोई भी चीज आप अपने कॉन्फिडेंस से पा सकते हैं. कॉन्फिडेंस जहां पे लूज हुआ वहीं पर आप मैच हार गए. जब तक आपके अंदर अपने आप पे भरोसा है आप कभी हार नहीं सकते, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, sorry 11. The most important element of a tragedy in Aristotle's view is, अरिस्टोटल के व्यू में, अरिस्टोटल के व्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी क्या है? कैथारसिस, प्लॉट, माइमेसिस, स्पेक्टेकल. What is the most important part of tragedy? There are 6 elements of tragedy.
राइट, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, जरा बताइएगा। 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कौन कौन से हैं और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? शाबाश, एक आंसर को छोड़ करके सबका आंसर बी है। वेरी नाइस। नहीं, दूसरा ए और आगे है, श्रुतिका, स्वाति, निशिदा लिखी दिया है। और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी इज इट्स प्लॉट। The most important aspect of tragedy is its plot, and Aristotle says that plot is the soul of tragedy. Plot is the soul of tragedy. It means plot is the most important part. And what is the plot? Plot है क्या? And according to Aristotle, plot is mythos. And mythos means arrangement of events, arrangement of incidents. अरेंजमेंट जो होता है उसको प्लॉट कहा जाता है, और प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल, these are the 6 elements of tragedy. First one is what? First one is plot. First one is plot, and according to Aristotle, the most important part of tragedy is the plot. तो जिसने भी आंसर किया है बी, सबका जवाब है बिल्कुल सही, और जिसने आंसर बी नहीं किया है उसका जवाब थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? आर यू एंजॉइंग? Who made a difference between poetry and poem? पोएट्री और पोएम के बीच डिफरेंस किसने बनाया है? कॉलरिज, एडिशन, आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ। Who made a difference between prose and poetry? प्रोज और पोएट्री का डिफरेंस किसने बनाया है? Who made the difference between prose and poetry? Between prose and poetry, the difference was made by Shabash, Coleridge. Coleridge made the difference between poetry and prose. Coleridge made the difference between poetry and prose. Right answer is A, and everybody has replied correctly. Next question. The very simple, the simplest one. Simplest one, आज का सबसे सस्ता क्वेश्चन है। Wordsworth's preface to the lyrical ballads is believed to be the preamble to romantic criticism. Romantic criticism का preamble कहते हैं इसे। In which year was it published? When was it published? 1798, 1800, 1802 or 1805? Nobody can dare to incorrect it. शाबाश, रीता, शशि, सुबोध,
हुडा, जूली, रमेश, प्रतिभा, रजनी, फरहीन, सपना, दिव्यांशी, भावना, श्रीपति, सारिका, फिरोज, रिंकी देवी, मौसमी खातून, लेट्स डिस्कस, प्रियंका शर्मा, स्वाति चौधरी, श्रुतिका, अब्बाश, राइट? विलियम वर्ड्सवर्थ and Samuel Taylor Coleridge both collaborated for the poems of lyrical ballads that was published in 1798. In 1798, there was no preface. There was a ballad, right? There was an advertisement, and in 1800, preface was added, and initially it was decided that Wordsworth and Coleridge both will collaborate in the preface, but it was Wordsworth alone who wrote the preface to lyrical ballads. उन्होंने इसको लिखा, और वो preface to lyrical ballad जो है, it is said the preamble of romantic criticism. romantic criticism का preamble कहते हैं, और इसी preface पर based होकर के Samuel Taylor Coleridge criticized William Wordsworth and wrote a book called Biographia Literaria. Alright, this question was asked in BIHAR State. Yes, यही सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं जो आप मेरे यहाँ से पढ़ के जाते हैं. हमारे पास सिर्फ बच्चे ही कम है, क्वेश्चंस कम नहीं है. प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वही आपके पेपर में घूम फिर के आते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. The end of writing is to instruct. The end of poetry to instruct by pleasing. The end of writing is to instruct, and the end of writing poetry, the end of poetry is instruct by pleasing. Who made this statement? Wordsworth's statement, Coleridge's, Johnson's, or Arnold's? The end of writing is to instruct. The end of poetry is to instruct by pleasing. Whose view is this? It is the objective of literature is to dictate, is to instruct, and the end of poetry should instruct with pleasure. Who is of the opinion? Wordsworth, Coleridge, Johnson, or Matthew Arnold? Shabash. Well done. Come on, come on. The end of writing is to instruct. The end of poetry is to please. And this statement was given by whom? Given by Dr. Samuel Johnson. This is Samuel Johnson's statement. Samuel Johnson is called literary dictator, and according to him, poetry should not only entertain, but poetry should entertain with instruction. Poetry should entertain with instruction. ये इनका स्टेटमेंट था. सी का डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट था. राइट, आई वांट टू with C, but you didn't. Only one answer is correct. Only one student has given the correct answer. Rest of the answers were not correct. Now Shashi Dubey and Firoz Khan are with option C. Earlier they weren't. Right? The right answer is what? The right answer is Dr. Samuel Johnson. The end of writing is to instruct, and the end of poetry is to instruct by pleasing. Right answer is C. Right? Next question. Question number 15.
In which poem does Pope group his literary rivals and critics together as the general enemy? Dullness. In which poem does Pope group his literary rivals and critics together as a general enemy, and they are the prince, they are the heir of the kingdom of dullness? किस पोएम में उन्होंने अपने क्रिटिक्स और अपने कंटेम्पररी माइनर पोएट्स सबको सैटिराइज किया है? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? द डंसियाड, द एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, द रेप ऑफ द लॉग, moral ashes. Which one is the answer? And this is a very simple question, right? In which poem Mr. Alexander Pope satirizes and criticizes his contemporary poets and his critic, right? जी अशोक कुमार मौर्य, लेट्स डिस्कस. आपका नाम क्या है? नेहा सिंह, जूली गौतम, फिरोज खान, सुबोध कुमार, वेरी नाइस. सारिका सिंह, मौसमी खातून, भावना, श्रुतिका, हुजा, शाबाश, कमान कमान, रीता राज, रजनी शाहू, दिव्यांशी, सपना की कितनी बीबियां हैं सपना? 15 बीबी है. अरे वाह, बधाई हो आपको, गुड लक. प्रतिभा, यस. और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द डंसियाड. इस क्वेश्चन का आंसर है ए. डंसियाड में उन्होंने अपने कंटेम्पररी पोएट्स को क्रिटिसाइज किया है. एंड हिज कंटेम्पररी पोएट कौन? जिसने शेक्सपियर रीस्टोर्ड लिखा था आफ्टर द एडिशन ऑफ अलेक्जेंडर पोप. पोप ने जब शेक्सपियर के प्लेस एडिट किए, देन there were a number of mistakes according to a poet, and then that poet re-edited Shakespeare's plays under the title Shakespeare Restored, and Mr. Alexander Pope became angry. Then he wrote the satire, and the name of the satire was the Dunciad. And in the Dunciad he attacked his contemporary poets, his critics, all right, and all the minor poets. All right, next, भारत चौधरी. नाम बदल लो भाई, लेट्स डिस्कस. से इतना अच्छा नाम है आपका भारत और आपने उसका अंग्रेजीकरण कर दिया है. लेट्स डिस्कस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Poetic diction was taken to be the standard language for poetry in. Poetic diction was taken to be the standard language for poetry in the Elizabethan age, in the neoclassical age, in the romantic age, or in the Victorian age. This age में poetic diction was taken to be the standard language for poetry. The standard language for poetry बोलिए आंसर, फटाफट बोलिए. Wow, great. This is my YouTube channel with 25k subscribers. Wow, great. What do you teach? Let's discuss. भारत, क्या पढ़ाते हो आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सारी. यू आर अ ग्रेट यूट्यूबर. पोएटिक डिक्शन was the poetic standard, was the standard language for poetry for which period? Elizabethan, neoclassic, the romantic, the Victorian. शाबाश. शशि, भावना, फिरोज. नहीं, आप बनाए रखिए भाई, आप बनाए रखिए. इफ यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब, देन बनाए रखिए, आराम से काम करते रहिए. राइट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का?
इस क्वेश्चन का आंसर है पोएटिक डिक्शन वाज टेकन टू बी द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ neoclassical age. Neoclassical age is the right answer here, not in romantic age. Romantic age में Wordsworth wrote poetic diction and poetic diction was added to, right? इसको ऐड किया गया था, it was added to the preface to lyrical ballads. उसी में इसको ऐड किया गया था और उसी में जब आप इसको ऐड किए थे तो वर्ड्सवर्थ ने अपने लिए नहीं, वर्ड्सवर्थ हैड क्रिटिसाइज्ड द 18th सेंचुरी पोएटिक डिक्शन, उसको पोएटिक डिक्शन कहा है, राइट? उसको पोएटिक डिक्शन कहा है, किसको? पोएटिक डिक्शन कहा है 18th सेंचुरी के वर्ड्स को, जो वर्ड्स आर्टिफिशियल होते थे, मैक्सिम्स वहां पर ज्यादा यूज होती थी और मैक्सिम के साथ वहां पर एपिग्रामेटिक स्टाइल यूज होती थी, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स यूज होते थे, रोजमर्रा की चीजें यूज नहीं होती थी, वो आर्टिफिशियलिटी थी, दैट इज कॉल्ड पोएटिक डिक्शन, राइट? सो राइट आंसर इज हियर बी, द नियोक्लासिकल एज, right, took poetic diction as the standard language for poetry and romantic age was a revolt, romantic age was a revolt against this, right? ये romantic age के against revolt है. You taught me in 2017 at the center of अध्ययन मंत्रा गुरुजी. Oh, thank you so much, thank you so much and all the best for your progress. Poetic diction was taken to be the standard of what? Neoclassical age. Clear हुआ बात कि नहीं? And romantic age was a revolt against this period. Romantic age was against this poetic diction, right? Namaste to God of English literature. अरे भाई जमीन पे बैठ जाऊं मालिक, इंद्रजीत जमीन पे बैठ जाऊं तो फिर आपको दिखूंगा नहीं. I am not any type of God, मुझे मत बनाओ. I am a man and I want to be a man, nothing more than that. देखिए एक हमारे स्टूडेंट भी आज जुड़े हैं और उनका नाम है भारत चौधरी और भारत चौधरी के पास 25,000 सब्सक्राइबर हैं. यहाँ तो 2,000 ही नहीं पूरे हो रहे थे, खैर किसी तरह से हो गए हैं. देखिए एक और स्टूडेंट हमारी आई है, नाम है उनका जोरदार खिचड़ी. वाह क्या बात है, इतने अद्भुत नाम कहां से लाते हो आप मेरे शिष्यों? हाँ, कौन आपको सलाह देता है, कहां से आपका? ऐसे एक जन और आते हैं भाई साहब, उनका भी इसी टाइप कुछ नाम है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. Close reading was practiced by which theory? Thank you भाई. Close reading is the concept popularized and practiced by the new critics like T.S. Eliot, like I.A. Richards, like F.R. Lewis, like Roman Jakobson. They people believed in close reading of the text. जी प्रियंका बिल्कुल. What is the meaning of the term hamartia as used by Aristotle in his theory of tragedy? In his theory of tragedy, Aristotle used the term hamartia, and what is the meaning of the term hamartia? Working of fate against the hero, tragic end of the tragedy, a weak trait in the character of the hero, or none. What is the meaning of the term hamartia? Hamartia is a very important term.
One of the important terms like catharsis, anagnorisis, hubris, again mythos, dithyramb, mimesis, peripecia, these are the popular Greek terms जो अक्सर पेपर में आ ही जाते हैं, पूछ लिया जाता है, हर पेपर में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। हमार्सिया का मतलब क्या होता है? हमार्सिया द टर्म हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय आई रिचर्ड्स बाय एसी ब्रैडली एज ट्रेजिक फ्लॉ। हमार्सिया इज आल्सो नोन एज ट्रेजिक फ्लॉ। एंड व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ? Tragic flaw is a weak trait in the character of the hero, or because of this tragic flaw the tragedy occurs. Tragedy होती क्यों है? Because of hamartia, because of the tragic flaw, because of the weak trait in the character of the hero. For example, the tragic flaw of Hamlet is too much thinking, right? He postpones things, right? वो काम को postpone करता रहता है, overthinking करता है, and his indecisiveness, he is unable to take decision. This is called his hamartia, right? ऐसे हर ट्रेजेडी में एक hamartia होती है, एक tragic flaw होती है, and Aristotle says that a hero must suffer. हीरो को सफर करना चाहिए, not by his vices but because of his tragic flaw. और वो tragic flaw क्या है? That tragic flaw is called hamartia, right? कैथारसिस मीन्स प्योरिफिकेशन, परगेशन। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है क्या? एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, रिकॉग्निशन, टू हैव द नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। एंड ह्यूब्रिस मीन्स प्राइड, एगन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, माइथोस मीन्स प्लॉट, dithyramb was a song, and mimesis means imitation, representation, and peripecia means reversal of luck, reversal of fortune. So right answer to question number 18 is C. Now I proceed to the next question, that is question number 19. What is denouement? Denouement is a French term. Denouement is a French term. What is denouement? The ending of a tragedy, the climax in a tragedy, the climax in a comedy, the ending of a comedy. What is denouement? This is also very simple question. Yes, Ajay, Julie, Huda, इंद्रजीत, सोनू, भावना, फिरोज, सपना। denouement is the ending of the story. शिबू पांडे, प्रियंका शर्मा, प्रतिभा उपाध्याय, दिव्यांशी, रिंकी, धर्मपाल, मौसमी, फरीन खान, शशि, जोरदार खिचड़ी, शाबाश। राइट, तो राइट आंसर इज denouement is the ending of a tragedy, right? That is a type of resolution, and it comes at the end of the, right? It comes at the end of the tragedy, right? Bappi's English Academy, very good. Now I have with me an academy that is also for English. Modern literary theory began with the work of which theorist? आंसर इज हियर इन बोल्ड। आंसर सबको पता है। मॉडर्न लिटरेरी थियोरी स्टार्ट्स विद स्ट्रक्चरलिज्म, एंड
that structuralist was Ferdinand de Saussure। और वैसे भी जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें भी आप क्रोनोलॉजी लगाओगे तो क्रोनोलॉजी में भी फर्डिनेंड डी saussure कम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21st। What is the main function of post-colonial criticism? Main function of post-colonial criticism to represent the relationship between colonizers and the colonized, to draw attention to the positive effects of colonization on literature, to explain why there are few examples of successful non-Western literature, to show the ways in which most Western literature is superior, right? Question number 21st. What is post-colonialism? Post-colonialism has 2 meaning. 2 meaning होती है। एक तो मीनिंग है पोस्ट कलोनियलिज्म की पोस्ट हाइफन कलोनियलिज्म, and post hyphen colonialism means after independence, and when there is a single term post colonialism it means it is a cultural term, it is a historical, not only historical but it is the continuation of colonialism. So post colonialism has 2 terms. What is the main objective of post colonial theory, post colonial literature? Its primary objective is to reject the universalism of literature, right? Literature is universal, it is rejected by post colonial theorists, and post colonialism basically talks about the relationship of the ruled ones and the ruler. What was the relationship between English people and the Indians, right? और इसी पर बहुत सारी थ्योरी डेवलप होती है, उसकी भी वीडियो किसी दिन आपको मिलेगी, एक बहुत भारी भरकम सी वीडियो पोस्ट कलोनियलिज्म पर। फिलहाल जो राइट आंसर यहां पर है, पोस्ट कलोनियलिज्म डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर and colonized. Right answer is A. All right, next question. 22nd. Match list 1 with list 2. List 1 with list 2. John Keats, Wordsworth, P.B. Shelley and William Blake. And then here 4 works are given and you have to match them. मैच कर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 22nd। क्वेश्चन नंबर 22nd मैच करिए। Alastair was subtitled as The Spirit of Solitude, and it was a poem by P.B. Shelley. John Keats wrote the poem Lamia, Wordsworth wrote The Excursion, and William Blake wrote Song of Innocence and Song of Experience. तो मिला दीजिए राइट आंसर क्या बनना है। All right, John Keats, Lamia, A third, Wordsworth fourth, this is the right answer, B. B for Bombay. All right, everyone is right. What does gynocriticism recommend as an approach to literature? And I hope you understand the term gynocriticism, और नहीं भी अगर आप समझ रहे हो तो आंसर इसी 4 में से कोई एक है। Examining only female authored literature more critically, considering women's literature outside of its historical context, becoming more familiar with the history of women and women's writing. Gynocriticism was a term coined by Ellen Showalter.
Ellen Showalter coined the term gynocriticism. Right? She coined the term gynocriticism, and through this term, she talked about the history of women and women's writing. Right answer to the question is C here. Right, not D. Right, C, history of women and women's writing. This is the basic aspect of गाइनोक्रिटिसिज्म. फीमेल राइटिंग की बात करती हैं गाइनोक्रिटिसिज्म से एलन शोवाल्टर. राइट आंसर इज सी. जी बापीज इंग्लिश एकेडमी, आप क्या पढ़ाते हो भाई? होरेश was a Greek writer, Roman writer, Italian writer, or English writer. Horace was a poet as well as a critic. He is known for his odes, Horatian ode. He is known for his satires, Horatian satires, and he is known for his criticism as well. He is known for his Ars Poetica. Where does he belong? Was he a Roman or a Greek or an Italian or an English writer? Question number 24. Feroz, Rita, Dharampal, Maushmi, Ramesh Yadav, Subodh Kumar, Abash, Kaman, Pratibha Upadhyay, Divyanshi Pandey, Shonu Bagotia. Well done. Come on, Huras, Hujja Tahir, अजय मिश्रा. अजय मिश्रा ने तो जो लिखा है वो ऑप्शन में ही नहीं है. क्या करें भाई, ऑप्शन बढ़ा दे. भावना, रिंकी देवी, ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्शन से बाहर के आंसर ले आते हैं. वेल डन, शाबाश. इसे कहते हैं हार्ड वर्क, है ना. इसे कहते हैं हार्ड वर्क कि जो ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में एक जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर 5, और उसी को क्लिक कर दीजिए कि ये रहा राइट आंसर. क्वेश्चन बनाने वाले को पता नहीं था, मुझे था पता, और इसलिए मैं उसको भी सिखा देता हूं आज. और होरेस वाज अ रोमन राइटर. रोमन राइटर है होरेस, और रोमन राइटर को ही रोमन राइटर को ही लैटिन राइटर कहा जाता है. रोमन को ही लैटिन कहा जाता है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. Who among the following linguists proposed the terms competence and performance? कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस ये किसका टर्म है? Who among the following linguists proposed the terms competence and performance? Noah Webster, Steven Pinker, Roman Jakobson, Noam Chomsky. बोलो गजब. नॉह वेबस्टर, एक डिक्शनरी आती है वेबस्टर्स डिक्शनरी, पता है ना. और स्टीवन पिंकर, रोमन याकॉब्सन एंड नॉम चॉम्स्की. अब अगर आपने कभी सीटेट की तैयारी करी होगी तो भी आप इसका आंसर जानते होंगे. अगर आपने कभी नेट की तैयारी करी होगी तो भी इसका आप आंसर जानते होंगे. और इसका आंसर जो है वह है नॉम चॉम्स्की. नॉम चॉम्स्की ने प्रपोज किया था कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस. राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी. राइट, डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर. नॉम चॉम्स्की प्रपोज्ड व्हाट? ही प्रपोज्ड competence and performance. Question number 26. Which of the following plays has a Machiavellian hero? Machiavellian hero
किस वर्क में है? मैकियावेली का तो नाम सुना है ना। मैकियावेली वॉज एन इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर। इटली का पॉलिटिकल फिलोसोफर था ड्यूरिंग द रेनेसांस, and he wrote a book, very popular book, The Prince, and he is generally compared with Indian politician, Indian diplomat, जिसे कहेंगे चाणक्य। चाणक्य से उसको कंपेयर करते हैं लोग मैकियावेली को, राइट। एंड इन विच वर्क मैकियावेलियन हीरो अपीयर्स? Tamburlaine the Great, Dr. Faustus, the Jew of Malta, and Edward II, and all the four plays were written by Christopher Marlowe. And in the preface of the Jew of Malta, the ghost of Machiavelli appears, right? और वहीं पर मैकियावेलियन हीरो है और सब ने इसका 100% करेक्ट आंसर दिया है विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following books is written by a woman? ये क्वेश्चन देखिए, अद्भुत, राइट। Which of the following was written by a woman? A Vindication of the Rights of Women, Social Contract, A Treatise of Human Nature, The Wealth of Nations। कौन सी बुक किसी महिला ने लिखी है? बाकी तो पुरुष ने लिखी है, एक आपको बता देना है। राइट, सबका जवाब सही जाएगा, पक्का, फुल कॉन्फिडेंस है मुझे। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन वॉज रिटन बाय मदर ऑफ मैरी शेली, और मैरी शेली के मदर का नाम था मैरी गॉडविन, राइट। मैरी गॉडविन नाम था उनका, वर्जीनिया वुल्फ मैरी गॉडविन नाम था, और उन्होंने लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन इन 1792। 1792 का ये वर्क है बाय मैरी गॉडविन। राइट आंसर इज ए, और सॉरी मैरी गॉडविन बता रहा हूं, मैरी गॉडविन तो मैरी शेली का ही नाम था, उनका नाम था मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट नाम था उनका, जो मैरी शेली की मदर थी, मैरी शेली की मदर थी। और एक पॉलिटिकल रैडिकल फिलोसोफर थे विलियम गॉडविन, इनकी वाइफ थी, विलियम गॉडविन की वाइफ थी, मैरी शेली की मदर थी, और पीबी शेली की मदर इन लॉ थी, राइट जी। शेली की सासू माँ थी, सास वही होती है जो सांस ना लेने दे, है ना, जो सांस ना लेने दे उसी को सास कहते हैं, और जो आनंद ना लेने दे उसी को ननद कहते हैं, नांद से बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance? To be or not to be, that is the question. Which of the following two oppositions are best evoked by Hamlet's utterance? Between life and death, between action and emotion, between affirmation and confirmation, between doing and abstaining from doing. Which two oppositions are here from Hamlet? क्वेश्चन नंबर 28। यस, पढ़ लीजिए एक बार फिर से। मौसमी, श्रुतिका, भारत, अजय, प्रतिभा, बापी, शिब्बू। Hamlet is a man of inaction, right? He is a man of
इन एक्शन। देखिए जिसके सासू माँ है वो समझ भी गया है। ग्रेट शशि, राइट। ही इज द मैन ऑफ इन एक्शन। तो वंस ही इज अनेबल टू किल, राइट, वो जब नहीं मार पाता है क्लाउडियस को, देन ही थिंक्स दैट to be or not to be, whether he should live or he should die, whether he should kill or abstain from killing. A and D, these two oppositions are best invoked by the line, right, by the line to be or not to be, that is the question और इसलिए आंसर इसका A करेक्ट है। Next question, 29th. Which two characters, speakers among the following exhibit the studious abstraction of scholars? दो ऐसे वो बंदे कौन से हैं जो बढ़ के पढ़ाकू नजर आते हैं अपने प्ले में? स्टूडियस ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्कॉलर्स। शाइलॉक, हैमलेट, एल पेंसरेसो और मोज़ाका। कौन है दोनों? शाइलॉक, हैमलेट, एल पेंसरेसो, मोज़ाका। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दो करेक्टर्स, मोज़ाका is a character from Ben Jonson's play Walpine or the Fox. Shylock appears in the play The Merchant of Venice. Hamlet is well known, and El Penseroso is the poem written in octosyllabic couplet by John Milton. And which two characters are scholars? And they are Hamlet, right? Hamlet and El Penseroso. Option B and C are true. So right option is B here. All right. Yes. Shubhadeep. All right. Next question, question number 30. Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? Ji Meenakshi, welcome. Hatiza Rafi. Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between old and the new? Question number 30. Alfred Tennyson, Robert Browning, Thomas Hardy, Matthew Arnold. Old order changed, yielding place to new. God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. कहाँ की लाइन है? वही इसका आंसर है। मैंने बता दिया, आपको पूरा क्लू दे दिया है क्वेश्चन नंबर 30 का। Who is the most sensitive to the conflict between the old and the new? और आंसर समझ गए आपने? Old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. These lines were written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson की lines हैं ये, and Mr. Tennyson was most sensitive to the conflict between old and new, and that's why he is known for his Victorian compromise. All right, right answer is A. Next question. सोच रहा हूं कि 10 o'clock तक क्लास वाइंड अप कर दिया करें, बहुत देर हो जाती है 10:30 तक आप लोग को भी, और सोना होता है लोगों को, मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, दिन भर बहुत सारे टाइप के काम होते हैं।
English as a medium of instruction was introduced in India by. English as a medium of instruction was introduced in India by Charter Act 1793, Christian missionaries in 1542, Macaulay's Minute on Education 1835, East India Company Act 1813. The English Education Act. The English Education Act was enacted by the Council of India in 1835 to give effect to a decision made by William Bentinck, Governor General of British India, and the minute was prepared by लॉर्ड मैकले और उसको मिनट्स ऑन एजुकेशन कहा जाता है इन 1835 एंड थ्रू दिस एक्ट इंग्लिश हैड बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन स्कूल्स. राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी. The earliest forms of English were brought to Great Britain by. The earliest form of English were brought to Great Britain by. Who brought English to Great Britain first? Anglo-Saxon settlers, Nordic tribes, French invaders, or Dutch immigrants? Who brought English first to England? इंग्लैंड में इंग्लिश को लाने वाला कौन था? पहले कौन लाया था इंग्लिश को इंग्लैंड में? क्वेश्चन नंबर 32. जी फटाफट बताइए आंसर. 35 क्वेश्चन ही आज कराएंगे. 32 पर आप है. 35th विल बी द लास्ट वन. द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश was brought to England by Anglo-Saxon, Nordic tribes, French invaders, Dutch immigrants. जी बताइए फटाफट आंसर दीजिए. नेहा, प्रतिभा, भारत, मौसमी, खतीजा. जी हुडा, रमेश. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है. इस क्वेश्चन का आंसर ए है. एंग्लो सैक्सन्स आते सबसे पहले हैं 450 एडी के आसपास. एंड द लैंग्वेज दे ब्रॉट फ्रॉम जर्मनी, दे ब्रॉट फ्रॉम देयर फादरलैंड, फ्रॉम देयर मदरलैंड. उसी लैंग्वेज को ही ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है. उसी को ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है जो एंग्लो सैक्सन का पीरियड है. इसी को एंग्लो सैक्सन लिटरेचर कहा जाता है. और जब वो आए लैंग्वेज अपने साथ लेकर के आते हैं और उसी को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, ब्रॉट बाय एंग्लो-सैक्सन सेटलर्स. आंसर इस क्वेश्चन का ए है. नॉर्डिक ट्राइब्स, फ्रेंच इन्वेडर्स जब आते हैं, दे डिडंट ब्रिंग इंग्लिश बट इन फैक्ट दे ब्रॉट फ्रेंच. फ्रेंच वो लेकर के आते हैं. सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. The term stream of consciousness was taken from the book. Stream of consciousness was taken from the book The Human Mind, The Principles of Psychology, The Mind of Man, Modes of Human Behavior. From which book the term stream of consciousness has been borrowed?
किस बुक से बारो किया गया है? फ्रेंच द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड thousands of times I have told you the answer to the question, right? The book was written by William James, and the name of the book was Principles of Psychology, and it was published in 1890. And William James was the brother of a novelist, Henry James, and Henry James and William James, they were Americans. All right, next question, that is 34th. ये DSSSB and EMRS क्वेश्चन है. Arthur Miller's Death of a Salesman. Arthur Miller was an American dramatist. Death of a Salesman, All My Sons, ये है उनके plays. And Death of the Salesman relies for its tragic seriousness on the fate of Willy Loman, Sturgeon, Vladimir और Lucky. बताओ आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. देखिए अजय जी ने आंसर दे दिया है एंड मौसमी खातून ने. राइट. वेयर आर अदर्स? इफ यू कैन रिप्लाई देन रिप्लाई, एंड अगर गलत भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं. वैसे अभी तक किसी ने गलत मतलब सही दिया नहीं है. जी रजनी ने दिया. वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन सर, थैंक्स, मोस्ट वेलकम. आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन. विली लोमैन इज द टाइटल कैरेक्टर हियर. डेथ ऑफ द सेल्समैन. रेस्ट ऑफ द थ्री कैरेक्टर्स व्लादिमीर, स्ट्रजन, लकी, अपोजो, ये कैरेक्टर्स हैं किस प्ले के? ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं वेटिंग फॉर गोडो के. और विली लोमैन इज द ओनली कैरेक्टर from Death of Salesman. Waiting for Godot is a play written by Samuel Beckett. Right, so right answer here is A. Next question, and today's last question. आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर. दीजिए जवाब. Who of the following writers recreates the life of the Yoruba Igbo community? Derek Walcott, Walsenka, Chinua Achebe और वॉकॉट. ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है. I am not going to tell you the answer to this question. You have to look for the answer. You have to look up for the answer. You have to search the answer and then you have to write down the answer in your comment box. Thank you for today's class, for joining me, for bearing me so patiently and for answering so many questions. All the best. मिलते हैं tomorrow with a set of new questions. Good luck. Good night. जय हिंद, जय भारत. All the best. My name is Vaibhav. Thank you, Vaibhav, for revealing your pious name.